So dear students, if you remember in our last class, we have studied about Pythagoras theorem in very much detail. I told you that who was Pythagoras and what theorem he has invented. Now I'm going to discuss his theorem, which was told by me yesterday only. First of all, I have discussed about you that Pythagoras has discovered the theorem which applied to right angle triangle only. Okay. Then I have also told you in any of the right angle triangle, the side exactly in opposite to right angle triangle, right angle is called H, or you can call it longest side, or you can call it the name which I have already told you, hypotenuse. Okay, so if you remember, I told you the spelling also of it. So right now I am writing in the short form. Yesterday I told you about it. So always remember, किसी भी right angle triangle में बेटा right angle की just opposite जो side होती है, that is the longest side of the right angle triangle. Okay, and rest of the two sides are legs of the triangle. इसको legs बोल सकते हो आप. So this is A, this is B. अब आपको पता है इस ट्राइंगल को ऐसे ही नहीं, हम इस ट्राइंगल को किसी और फॉर्म में भी खड़ा कर सकते हैं. दैट इज व्हाई इसको हम लेग्स बोलते हैं. ठीक है. अब अगर आप इसको H लेते हो देन फाइन, अगर आपको इसको C मान के चलना है दैट इज आल्सो ओके. ठीक है. इफ यू वांट टू टेक इट एज C इट्स फाइन. इफ यू वांट टू टेक इट एज H दैट इज आल्सो फाइन. आई हैव टोल्ड यू द नेम. मे बी इस वाली क्लास में आपको नेम इंट्रोड्यूस ज्यादा नहीं किया गया है, ABC के फॉर्म में शो किया गया है. ठीक है. बट आई एम टेलिंग यू एज इन द फॉर्म ऑफ क्लास 9th. ठीक है. 9th में ये चीज आपको डिटेल में पढ़ने मिलेगी. सो आई एम टेलिंग यू इन दैट ऑफ रिगार्डिंग दैट. सो दिस इज H, दैट इज हाइपोटेन्यूज. आई एम टेकिंग आल्सो एज अ थर्ड साइड, and these are two other sides of a right angle triangle. So it means in this right angle triangle we have three sides are A, B, C. C को we can write it down as H, that is hypotenuse. Okay. Now what Pythagoras says? Pythagoras says in a right angled triangle, this you can note it down. In a right angled triangle, the square of the longest side okay. Now longest side means hypotenuse, which I have already told you. If you can take it as C, it's fine. If you want to take it as hypotenuse, that is also fine. So the square of the longest side is always equal to the sum of squares of remaining two sides. This is the complete statement of Pythagoras theorem. Okay. This property we have already studied, that in right angle triangle, this is proved. What is proved? That the square of hypotenuse, or you can call it the square of longest side, is always equal to the sum of squares of other two sides. अगर right angle triangle है तो ये होगा, और अगर ये है तो right angle triangle होगा. That means it's a vice versa. Okay, it means अगर आपसे बोला जाए, आपको याद होगा जब हम पैरेलल लाइन पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बोला था कि if there are parallel lines, corresponding angle and alternate angle will be equal, and if alternate angle and corresponding angles are equal, that means lines are parallel. Just vice versa. Okay, it means the lines are correct. अगर आप इसको ऑपोजिट लेके चलते हो तो सेम फॉर्म में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सरसाइज में जो हम लोग अभी करने वाले हैं. So remember, if this statement is true, it means Pythagoras theorem is applied. It means the triangle is right angle triangle. And if right angle triangle is there, it means this statement is true. Okay, just opposite of each other. So let's discuss in the form of normally expression what we write. Now what Pythagoras says,
square of longest side. Longest side means I have told you right angle की just opposite side बेटा जो होती है वो longest side कहलाती है. ठीक है, तो यहाँ पर longest side कौन सी हो गई हमारे पास h square, that is hypotenuse, it will always be equal to the sum of these two, because these are remaining now, sum of square of these two remaining side. It means h square will always be equal to a square plus b square, or you can write it down, c square will always be equal to a square plus b square. This is the form of expression. So if you talk about 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter, and I am asking from you all that are these sides belongs to a right angle triangle, a simple method will apply. First of all, you will select out of these three which one is the longest one or which one is the greatest one. So we have 5 centimeter as the greatest one. Okay, so here we will write it down 5 square. Okay, now what are remaining here? Remaining are beta 3 and 4. So we will have 3 square and 4 square. Now you are knowing as the property of Pythagoras, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए. So let's try this out. 5 square means 25, 3 square means 9, 4 square means 16, 9 and 16 will give you 25, and this is already 25. Now you can see both are coming equal. This is also 25 and दोनों का sum मिलाकर के also coming 25. That means your statement is correct, and that means Pythagoras statement is correct here. So Pythagoras statement is only true for right angle triangle. That is why these measurements which I have given you are from right angle triangle only. Fine. So as you all can see, I gave you another example that you have to again check that 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter, are these three measurements belongs to a right angle triangle or not. The same process will apply. You have to select one of the longest side from here. You are knowing out of 6, 8, 10, the 10 is the largest one. So you have to simply take 10 square and remaining two sides is square. So 6 is square and 8 is square, you will take it separately. Now you have to just check 6 ka square, you are knowing it's 36. 8 ka square, you are knowing it's 64. 10 ka square, you know as 100, which is already taught by me in the previous class. Okay? Now 36 and 64, when you will add, you will get it 100. And here you are already having 100. That means it is coming as equal. That shows that Pythagoras property is being applied here. That says here or that proves here that these sides are from a right angle triangle. Okay. So remember students, as we discussed that these are the side related questions. So let us move to 6.5. As you all know, I have already discussed many other times, I think today only, that Pythagoras theorem will always help you to find out unknown side. Unknown side का मतलब ये होता है, suppose एक triangle की 3 sides होती हैं. Everybody knows about it. ठीक है, अगर उस ट्राइंगल के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इफ इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और आपको अगर कोई भी दो साइड पता है तो आप थर्ड वन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, मे बी अगर वो हाइपोटेन्यूस होता है तब भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. इफ इट इज अदर साइड्स लाइक ए या बी में से कोई अगर मिसिंग है तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस सेम थ्योरम. ठीक है, एंड फॉर नोइंग दिस थिंग, please remember now the concept of square root and square both will be applied here. Okay, let's say I am giving you one question. The question related to exercise 6.5. Exercise 6.5. I am talking about question number 1 and I will discuss about it with the help of statement. Now look at here. It is telling PQR is a triangle. So now let's draw first a triangle. कभी भी याद रखो
अगर पाइथागोरस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है बेटा, तो आपको सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना चाहिए. आई एम टेलिंग यू द स्टेप ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन. ठीक है, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम इज ओनली अप्लाइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो सबसे पहले आप डायग्राम ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल यू ड्रॉ. ठीक है, उसके बाद आपको पता है इसमें एक राइट एंगल होगा, वो आपने उसको भी ड्रॉ कर लिया. ठीक है, नेम यू विल नॉट राइट, नेम we will see according to the question. ठीक है, now the question is telling PQR is a triangle right angled at P. अब आपको ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना है कि उसमें बोल क्या रहा है, right angled at P, मतलब यहाँ पर जो P एंगल है that is right angle. तो आपने सबसे पहले यहाँ मार्क कर दिया P. अब बचा क्या, ट्राइंगल का नाम था PQR, so remaining are QR. तो अब QR आप कहीं भी लिखो. So this is I am Q, this is I am writing R. Okay. Now I have put my diagram. If your diagram is right, I am telling you everything will be going to right. Diagram should be always correct. If your diagram is correct, your whole statement I am telling you everything will go correct. But if your diagram is drawn wrong, your answer is not going to come. Okay. Now move on to the next process. I have drawn the diagram, I have written the names of it. Now it is telling, according to the question, PQ is 10. So I have written here PQ is 10. Then it is telling PR is 24. So I am writing here PR is 24 centimeters. Now you have to find out QR. May I ask from you all, QR is the longest side or QR is the leg of triangle? Can you please tell me? Okay. Okay. Some of the students are telling, I think one or two students are telling it's a leg of triangle. But let me tell you beta, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो this side which is unknown in the question is exactly in opposite of right angle. I think it's correct. No, it is visible also. So remember, the side which is exactly opposite to the right angle, it will always be the longest side. Longest side means H or you can call it hypotenuse. Okay. किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको पहले हाइपोटेनस जाना बेटा सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी आपका थ्योरम करेक्ट प्रूव होगा, है ना. सो अब आपको पता है स्टेटमेंट क्या होता है, दैट इज h स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और आपको पता है h हमको मिसिंग है, तो हम मिसिंग को मिसिंग रहने देंगे, वी विल नॉट डू एनीथिंग. ठीक है, नाउ लेट्स पुट अदर वैल्यूज. एक है आपको 24, आई एम पुटिंग 24. एक आपको पता है 10, तो आई एम पुटिंग 10 स्क्वायर. ओके, नाउ आई थिंक आपने 20 तक याद किया है, तो आपको उसके आगे का भी याद नहीं होगा. बट आई एम टेलिंग यू हियर 24 का स्क्वायर जब आप करते हो यू विल गेट इट 576. ठीक है, 576 is the square of 24. 24 multiply by 24 when you will do, you will get 576 plus 10 का स्क्वायर. जब 10 का स्क्वायर करोगे तो you will get 100. ठीक है, ये आ गया. अब now it's only h square. I'll put only h square. ठीक है, now see this 576 and 100 जब आप ऐड करोगे you will get it 676. ओके, नाउ इतना स्टेप बेटा आपको आई थिंक सभी लोगों को बन जाएगा. ठीक है, इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड इन माय लास्ट क्लास, जैसे एडिशन का उल्टा होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का ऑपोजिट इज एडिशन, मल्टीप्लाई का डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लाई, द सेम वे स्क्वायर का ऑपोजिट होता है बेटा स्क्वायर रूट. जब आप उसको ट्रांसफर करते हो ना, तो वो उस तरफ जाकर के स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो स्क्वायर रूट मींस यहाँ पर आपका h यही रहेगा एंड दिस स्क्वायर रूट विल बी लाइक 676. This is the symbol of square root which is already told by me. So this is 676. अब जिनको नहीं पता है कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं एक बार फिर से चेक करो. 676 को आप साइड में लीजिएगा. अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट पुट कर दो, और अगर आपको याद नहीं है तो you will use the method of prime factorization, or you can also do division method which is again discussed by me in the form of video. Okay, now look at here. We will start by 2, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 8s are 16. ठीक है, then again we'll go by 2 only.
2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 9s are 18. ठीक है, 169 आ गया। और आपको पता है 169 जो होता है वो 13 से सॉल्व होता है ना? आपने याद भी किया है अभी 20 तक। So it means it will not divide by 2, not by 3, not by 5, not by 11, not by any other number except 13, because it is the square of 13. So आपने x divide किया 13 से, 13 का 169 होता है। Now 13 you will go get, and again it will be divided by 13 only. Now the process will stop. Now look at here. अब आप यहाँ पे लिखोगे स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या आ गया, 2 into 2 into 13 into 13. ओके, नाउ व्हाट यू डू, स्क्वायर रूट से बेटा केवल वही नंबर बाहर निकलता है जो पेयर के फॉर्म में होता है। पेयर मींस 2 and 2 का पेयर है आपके पास, तो आपके पास 2 का कंप्लीट पेयर है, 13 का भी कंप्लीट पेयर है। तो यहाँ से निकलेगा 2 बाहर और एक निकलेगा 13 बाहर। सो इट मींस your answer will be 26 centimeter. Okay, this is the complete solution for finding out the sides if it is unknown.